Hey everyone, hope you all are doing great. In today's video, we are going to talk all about React, which is a popular library of JavaScript used for building user interface. So now, without wasting our time, let's explore React together. These are some points we are going to discuss in this video. We are going to see what React actually is and a little bit about React history and why should you choose React. And some awesome features of React need to be discussed, and one more thing need to be discussed is that this course is going to be completely beginner friendly, so you just need to know some basics of JavaScript. What is React actually? As I mentioned it earlier, React is an open source JavaScript library used for creating user interfaces. Its specialty is that it can be used to create single page applications. If you don't know about single page application, it's that kind of application in which all your code is recovered with a single page tag. Let me tell you in simple words. The single page application doesn't reload because it only loads the data that is necessary for the user. And the interesting point in all this scenario is that it instantly stores the endpoint of your application and loads your entire application into a single page, which makes its performance best. So now let's discuss some history of React. React was created by Jordan Walke. He was a software engineer at Facebook. ReactJS was a prototype, and you can say an early version of React was made available publicly. And do you know that in 2011, Facebook newsfeed was the first platform to use React.js? Following that, you may view some notable apps developed with React, including Instagram, Netflix, Yahoo Mail, and Code Academy as well. So now, why should you choose React? Because of its fantastic speed. As I previously mentioned, React is incredible fast, and the reason behind that, it's especially good at creating single-page applications. React allows a complete flexibility to developers. It can offer a huge advantage because code in React is easy to maintain and it has a fantastic modular structure. Performance of React is amazing because React uses virtual DOM and rendering optimization, which make its performance fantastic. Okay, what is this virtual DOM now? Virtual DOM is like a lightweight copy of an actual DOM, or you can say a virtual representation of DOM. So for every object that exists in original DOM, there is an object for that in React virtual DOM. Here is an example. As you can see, this is a tree of nodes, where each node is connected to every other node. Okay. Now, if any change occur in the tree or any node added, what will React do? Simply React make a comparison between them and see what and where change occur. And finally, React will update a specific area of the node without replacing it or generating a whole new DOM. This is a simple example of nodes to make you familiarize with the virtual DOM, which is a powerful feature of React. So now let's discuss some more amazing features of React. To know about unidirectional data binding, let's first discuss what is data binding actually. Data binding is a process actually in which you integrate the view element, or you can say a user interface, with the data that populates. Okay, so now what is one-way data binding actually? What will happen is one-way data binding will bind the data from component to view or from view to component. And then what happened is when any change occur in component, data would get reflected in the view, and for the view to component, any change occur in the view would get reflected in the component's data. With React, we can write declarative code because instead of giving instructions, we tell React what we want to be done. React is declarative because we write the code that we want, and React is in charge of taking our declared code and performing all the JavaScript and DOM steps to get us to our desired result. Components are the biggest feature of React because React is library which is based on component architecture. So what are they? Components are independent and reusable bits of code. They serve the same purpose as the JavaScript function but work in isolation and return some HTML. Okay. So what happened actually is we divide the UI into tiny pieces and then put them all together to form a complete user interface. It helps us to make our code clean and concise and more comprehensive as well. JSX is a powerful feature of React. It stands for JavaScript XML. It is a JS extension that gives us ability to write the elements in pseudo HTML syntax. Let me show you the code.
This code is look like HTML code, but this is not HTML. This is a pseudo HTML syntax. It saves you from dozens of create element calls. Here comes an interesting part. Let's discuss that how and from where to start our React journey. ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस तरह किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले उसका एक कंप्लीट एनवायरनमेंट सेटअप किया जाता है, इसी तरह हम रिएक्ट को यूज़ करने से पहले उसका एक एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम उसके लिए जो इनिशियल लेवल पे या जो चीज़ें रिक्वायर्ड है हम उनको इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एक साइट ओपन की हुई है जिसका नाम है Node.js। आपने क्या करना है, सिंपली आपने इस साइट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आपने सिंपली क्या करना है, इसका जो लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे आके आपने इसका जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। ये है क्या और हमने इसको यूज क्यों करना है? Node.js सिंपली एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जिसको हम यूज करते हैं या जो यूज की जाती है आपकी जावास्क्रिप्ट को आउटसाइड द ब्राउजर रन करने के लिए। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने सेपरेटली अपलोड किया है, आप उसको चेक कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अभी के लिए आपके रिएक्ट के सेशन के लिए इतना काफी है कि ये एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जिसको यूज किया जाता है आपकी जावास्क्रिप्ट को आउटसाइड द ब्राउजर यूज करने के लिए। ओके सो अब हम क्या करेंगे, हम अपने सिस्टम पर अपना फेवरेट कोड एडिटर ओपन कर लेंगे, जो कि मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप भी विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज करें। तो हम सिंपली अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। आप यहाँ से अपना टर्मिनल ओपन कर ले या आप अपने सिस्टम का टर्मिनल यूज कर लें, और यहाँ पे आकर हम चेक करेंगे कि हमने जो नोड इंस्टॉल की है उसका कौन सा वर्जन आया है हमारे पास और क्या वो इंस्टॉल हुई भी है कि नहीं। देन हम यहाँ पे अपना npx का वर्जन चेक करेंगे। npx क्या है? ये एक्चुअली एक टूल है जो कि यूज किया जाता है आपके पैकेजेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। npm और npx ये दो ऐसे टूल्स हैं जो आप अपने रिएक्ट की जर्नी में बहुत सुनने वाले हैं इसके बारे में। तो और npm किस लिए यूज होते हैं? npm एक ऐसा टूल है जिसको हम यूज करते हैं दूसरे पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए। ओके तो अब हमने चेक कर लिया है कि हमारे पास नोड भी है और हमारे पास npx भी है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, ऑब्वियसली हमने अपनी ऐप को एग्जीक्यूट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे npx create react app। ये कमांड आपको सिंपली उधर से भी मिल जाएगी आपकी रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से। हम यहाँ पे लिखेंगे npx create react app। मैं सिंपली यहाँ पे डॉट लिखूंगी बिकॉज ये क्या करेगा, ये डॉट क्या करेगा, हमारी जो रूट फोल्डर है जो कि ट्यूटोरियल है इसकी बेस पे हमारी पूरी ऐप क्रिएट कर देगा या इसके नेम पे हमारी पूरी ऐप क्रिएट कर देगा। सो इतनी ये ऐप क्रिएट होती है। उसके बाद मैं ज्वाइन करती हूँ। So now as you can see we have successfully created an application because it said happy hacking। अब क्या करना होगा, हमें चेंज डायरेक्टरी को चेंज नहीं करना होगा बिकॉज हमने जब अपनी एप्लीकेशन क्रिएट की तो हमने उसे क्या कहा था अपनी एप्लीकेशन को या अपनी npx की कमांड को कि हमारी जो भी रूट डायरेक्टरी है या जो भी रूट फोल्डर है उसकी बेस पे हमें वो एप्लीकेशन क्रिएट कर दे। अब हम इसी फोल्डर के अंदर हैं तो ऑब्वियसली हमें डायरेक्टरी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब सिंपली एक कमांड रन करेंगे जो कि है npm start, जो कि हमारी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देगा। As you can see, we have successfully got a boilerplate of our React application, which is by default running on localhost 3000. So stay tuned because in our next video, we are going to talk about directory structure of a React application. At the end of the video, thanks for watching. Thumbs up if you like the video and subscribe our channel to get more videos like that.